Ankahee episode 4. Today we have with us Vinayak, and he's one of the sweetest guy I know. He's an editor and a graphic designer. We already had did this session, and there was a technical issue, so the whole session went down the I don't know where Marvel movies are going, maybe there. But I guess I just have to add him again and post the second half of this. And I guess we lost the first half, so I hope Vinayak joins back. And if I don't know what happened. Just went off, man. Super duper technical issue. So this part is gonna be high Bhumik. Hi Leher. Uh, we'll wait for Vinayak to join. The last part of the session is gone, sadly. So this is gonna be a very. I guess if Vinayak joins, I'll just repeat some questions so that we have an overall idea. But it's good that my hate towards Marvel movies is not gonna be online now because a lot of my friends are big fans, and I don't want those conversations right now. Hi Vinayak, so sorry man. I'll just add you back. So sorry Hi. that whole went. That कोई whole बात thing नहीं is कोई gone. बात नहीं So इट्स ओके we'll might have it'll to stay repeat in my some questions. memory. No, no. हाँ, I'm that's saying fine. no. Yeah, we'll have to repeat some questions. But let's start with Hmm. you're an editor, and I'll just give a small glimpse of what happened in the previous conversation. Vinayak is studied editing and graphic designing in Mac and not in UPG. And he's been practicing editing and graphic designing for a while now. He wants to pursue editing, but he's also confused that he wants to be on set as well. So we were having a conversation about Marvel movies and why they are good or bad. Vinayak is a fan, I'm not, and I'm happy that that conversation is not online anymore Hmm. because already people were getting aggressive. So I was like, okay, ठीक है, chale do जा. Let's not talk about that. But let's continue the conversation where we left it. That editing is an invisible art form, and if you Hmm. see a well edited film, then the editor has failed. What is your take on that? जैसे मेरे साथ ये पहले डायरेक्शन के साथ में होता था. आई यूज्ड टू Mm-hmm. थिंक कि व्हाट हाउ डू यू से दिस फिल्म इज वेरी वेल डायरेक्टेड. लाइक मेरे को Mm-hmm. बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट डायरेक्शन के बीच में वो समझ नहीं आता था Uh-huh. कि हाउ डू आई Uh-huh. किधर करते Uh-huh. हैं. तो वैसे ही Mm-hmm. बेस्ट एडिटिंग के साथ में भी लाइक आई कांट इफ आई रियली लाइक द फिल्म सो आई कांट जस्ट से कि यार इसकी एडिटिंग बहुत अच्छी थी बट साउंड में मार खा गया. Mm-hmm. मेरे साथ पर्सनली होता है कि बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट एडिटेड फिल्म में मेरे को लगता है कि बेस्ट फिल्म भी बेस्ट एडिटेड फिल्म जीत सकती थी. मैं वो Okay. Uh-huh. जो बहुत थिन सी लाइन है वेर Mm-hmm. अ बेस्ट एडिटेड फिल्म बाय इट Uh-huh. विंस. जैसे विप्लैश का इफ यू सी लाइक यू कांट रियली सी दी एडिट क्योंकि वो ऐसा कॉलर से पकड़ के रखता है फिल्म को कॉन्स्टेंटली. लाइक Mm-hmm. थोड़ा सा छोड़ेगा ना फिर से pick you up. Even with Ford versus Ferrari, that one best editing, it's Mm-hmm. always like you're sitting on the edge of your seat and you're so involved in the Uh-huh. film कि you Uh-huh. can't. वो वैसा ही है कि वो हर cut is happening with your blink. You can't tell Mm-hmm. कि ये change कभी Mm-hmm. हुआ. Okay. Like Okay. sometimes it happens where if there's a very long take, if some film has Huh. a very long take and बहुत ज़्यादा action चल रहा है वो take में. So Uh-huh. sometimes I get so involved I can't tell कि ये लॉन्ग टेक ही था कि बीच में कट हुआ कि नहीं हुआ. वो Uh-huh. मेरे साथ तो बहुत बार होता है वेर मैं Hmm. पकड़ नहीं पाता इतना जल्दी कि ये लॉन्ग टेक चल Yeah. रहा है इतनी देर से ये तो कट Yeah. हुआ ही नहीं. सो दैट वो जो लॉन्ग टेक में मेरे साथ जो होता है वेर आई कांट टेल कि ये कट कभी हुआ दैट. एंड देन व्हेन आई वॉच अ फिल्म वेर इफ आई कांट नोटिस द कट्स एंड आई कांट टेल कि ये लॉन्ग टेक चल रहा था कि नहीं, देयर आई फील कि द एडिटर्स डन हिज जॉब because Okay. I couldn't tell if this cut or if this was one entire Yeah. take Yeah. unless ऐसा Uh-huh. obviously तू वाइड शॉट से क्लोजअप में आ जाएगा सडनली तो बहुत वो Jerk. Huh. नोटिसेबल होता है. Huh. बट इफ यूर The वेरी huh. हाँ पर एक ही अगर ऑलमोस्ट सिमिलर Mm-hmm. इसमें लेंसिंग में अगर कुछ चल रहा है एंड इफ यू कांट टेल कि Hmm. ये इतनी देर से ये लोग बात कर रहे थे इवन विद दिस वो
असगर फरादी का कौन सा फिल्म है जिसमें सेपरेशन. वो पूरा सेपरेशन में द एंटायर लॉन्ग टेक दैट इज हाँ हाँ. हैपनिंग. द फर्स्ट टाइम आई वॉच्ड इट आई कुडंट टेल कि ये इतनी देर से लॉन्ग टेक चल रहा है. द सेकंड टाइम आई वॉच्ड एंड पूरा खत्म हो गया. आई स्टिल डिडंट नो. सेकंड टाइम आई गॉट टू नो. आई वॉच्ड इट अगेन. बीच में आई गॉट सो इन्वॉल्वड आई फॉरगॉट कि दिस इज व्हाट आई हैड टू वो. नोटिस. हाँ हाँ. हाँ सो वो एंड जब ये एडिटेड फिल्म के साथ जब कट फिल्म के साथ वो फीलिंग आती है कि ये पता नहीं लॉन्ग टेक चल रहा था कि नहीं, इज वेयर आई फील कि ultimately becomes an invisible art. You couldn't. There was an invisible cut in between, and you didn't even realize or cut. Okay, you चला गया. Yeah. emotion next shot पे पहुंच गया. Okay. So There's this one. हाँ. Sorry, continue. Say. Continue. No. No, I So, was just saying there's Purva's question that Bohemian Rhapsody won the Academy for Best Editing. What do you think about that? मैं वो में मतलब मेरी दो ऐसा विप्लैश एंड दिस फोर्ड वर्सेस फरारी के एडिटिंग पे मेन ओपिनियन है. बोहेमियन रैप्सोडी मेरे को ओवरऑल एज अ फिल्म आई डिडंट एंजॉय. सो मैं Same. वो तो मैं उसको एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो मेरे साथ ही होता है. मैं अभी भी आई कांट ड्रॉ लाइन बिटवीन बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट पिक्चर. क्योंकि इफ समथिंग दैट्स वन बेस्ट डायरेक्शन आई फील वो ओवरऑल पैकेज आ जाता है वो. सो बोहेमियन रैप्सोडी अगर मेरे को फिल्मी इतनी खास नहीं लगी तो उसकी एडिटिंग बहुत अच्छी भी होगी. इट वोंट आई वोंट बी एबल टू बी लाइक कि एडिट तो बहुत ही अच्छा किया भाई. अगर फिल्म ने हक दिया तो हर चीज थोड़ा नीचे आ जाती है. Okay. You said that you were not able to you're not able to notice cuts, and that's where like it's like कि सही है, अब सही है, अब सही है. ये feel सही आया, मतलब फिल्म सही है. What about Edgar Wright films? Edgar Wright का Baby Driver is Edgar Wright, right? Yeah. Baby Driver and मैंने सिर्फ Scott Pilgrim and Baby Driver ही देखी है. Scott Pilgrim में हाँ. स्कॉट पिलग्रिम तो वो तो मतलब आकर ऐसा कान में बताता है कि कट हुआ. अभी नेक्स्ट अब नाउ वी विल वॉच समथिंग एल्स. एंड बेबी ड्राइवर वाज उल्टा फॉर मी. बेबी ड्राइवर वो वैसा ही था, एज ऑफ द सीट ऐसे पकड़ के रखा है. सो बेबी ड्राइवर में आल्सो एवरीथिंग वेरी प्रोमिनेंट. इट्स नॉट ऐसा फ्लोई, इट्स नॉट वेरी फ्लोई. बट देन मतलब ये फिल्म मेकिंग में एवरीथिंग हैज सो ऐसा you can choose where you want to be. It's not even like editing ka bhi. Best editing has two answers. Even an invisible cut is वो भी उससे भी वो emotion आ जाता है. And एक बहुत hard cut is also where that hard cut is needed. And if that hard cut is made, तो if it देखो emotion अगर derive हो रहा है तो it just doesn't have to be कि यार मेरे को तो cut दिखा ही नहीं और कितना seamlessly flow कर गया. तो जहाँ पे हार्ड कट रिक्वायर्ड है, जो फिल्म में सिर्फ हार्ड कट्स ही होते हैं, फिर तो देन एडिटिंग वर्क्स रियली वेल ओवर देयर. आई एम सॉरी, it shouldn't pull you out of the narrative, then everything is fine, right? Till the time ऐसा कॉलर से पकड़ के रखेगा एंड वो तेरा फोकस सिर्फ इधर ही है, तब तक everything is working. Okay. Now one of the biggest thing an editor has to do is the pacing of the film. Now okay, so Ritik, let's talk about like Ritik Kashti. You edited Kashti, and then Dal Baat happened. Both the films are completely different. Okay. I was so how long is Dal Baat? Like, if you can tell that. Dal Baat would be somewhere around 30-35 minutes. 35, and this Kashti was 7, 8, 9 minutes, I guess. Kashti was 8. Kashti. हाँ, the film was 8 minutes और फिर वो आगे पीछे सब करके ended at 10. Okay, so 10 minutes and 35 minutes. 8.5 minutes. Let's first talk about how different are these things, because 10 minutes whole narrative finishes, 35 minutes like I guess what 20-25 minutes bigger than the short film you made. So how different was the process for both the things? Films की pacing, जैसे this I learned during like the pre-production of Dal Baat, and I'm still now that is editing, now that it's at its editing stage, तो वो दिख के भी आ रहा है where मतलब दाल भात में जैसे I'm not editing दाल भात, तो मेरे को ऐसे थोड़े टाइम के periods में I get to see
what is हाँ, done. okay, okay. And so वो objectivity भी रह जाती है, and then I can, मतलब मैं fresh mind से देख पाता हूँ उसे. हाँ, हाँ, So हाँ. something दाल भात का editor is like he's really good, and हम्म, उन्होंने एक like नेमल और उन्होंने मिलके एक चीज की थी where I saw two cuts of dal bhat, and length was almost similar. So dal bhat is हम्म, basically it's based in a village, and हम्म, गुजरात के एक village में based है, and वहाँ like वो गांव बहुत slow है. Like हम्म. everything in that village is like तू उधर पहुंचेगा वो everything becomes slow, time becomes हाँ, stretched. वो हाँ, it's not हाँ, fast paced like compared to Mumbai. हाँ, Mumbai is very fast. हाँ, हाँ. So वहां पर so that film uh, let's assume cut 1 and cut 2. Cut 1 हम्म, same duration, cut 2 same duration. हम्म. But बीच में जो cuts that were made, cut 1 same length, it felt faster, but cut 2 same length felt like वो जगह का पेस आ रहा था. वो फिल्म Okay. वो जो एनवायरनमेंट जो चाहिए था, हाँ, हाँ, हाँ. Got it. हाँ जो स्लो पेस चाहिए था वो उसमें आ रहा था. तो हम्म, वैसी कश्ती एंड दाल भात में दाल भात इज वेरी, फिल्म में बहुत सारी चीजें हो रही है, बट वो हम्म. लाइक वो मैं The भी एक्सप्लेन overall नहीं कर पा रहा हूँ, pace बट of the हाँ film is वेरी समझा स्लो, समझा. बट थिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. Yeah, एंड yeah. कश्ती, जैसे कश्ती जब एडिट हो रही थी तभी हम्म, हम लोग ने SY में बनाई है कश्ती. हाँ, सो तभी हम्म. तो ऐसा पेस एंड रिदम तो कुछ पता ही नहीं था, सॉफ्टवेयर यूज करना आता था एंड काइंड ऑफ एडिटिंग आती थी. तो ऋतिक और मैंने बैठ के ऐसा फिगर आउट किया एडिटिंग, एंड उसमें हाँ, हम लोग कश्ती एडिट कर रहे थे और एक दिन अदिति आई. then Aditi went like कि ब्रो इसका पेस मतलब रिदम नहीं बैठ रहा है कट्स में. I was like हाँ. ऐसा भी, and in my head I was like कि shit ये भी मतलब ये पार्ट भी आता है. What हाँ, is, I used to think कि rhythm सिर्फ music and all, मतलब I हाँ. used to think music will bring rhythm to like the हाँ, edit, हाँ, but then हाँ. that is not the case. Your cuts build the rhythm, जो like करते करते realize हो रहा था. Ritik is not happy And about this. now ऋतिक को पता है सब. So हाँ. ऋतिक so But this is going to my Instagram, no, so he's not happy about this. so Sorry, continue. नहीं, ऋतिक और हाँ, मैंने साथ में फिगर आउट की ये सारी चीजें. हाँ, हाँ. तो एंड लाइक बहुत रिसेंटली आई हैव लर्नड हाउ टू से आई डोंट नो. ये भी वो हम्म. भी एक आर्ट ही है डिफरेंट, वेर लाइक एक्सेप्टिंग यू डोंट नो इज ऑल्सो Yeah, वेरी yeah. बिग थिंग. सो हम्म. नाउ तभी आई हैडंट रीच. तो जब ऐसा रिदम एंड पेस एंड ऑल जब वर्ड सब आ रहे थे, जब सिर्फ प्रीमियर का इंटरफेस यूज करना आता था, एंड आई यूज्ड टू थिंक कि यही है एडिटिंग, इससे ज्यादा आगे नहीं हम्म. है एडिटिंग. तभी ब्लिंक ऑफ एन आई हम्म. भी नहीं आई थी लाइफ में. एंड सो नाउ सो तभी एक्सेप्टिंग कि नहीं यार रिदम, हाँ कर लेंगे इसका एडिट का रिदम आ जाएगा कुछ तो कर लेंगे, तभी वो फेज था. हाँ. नाउ आई कैन से कि नहीं यार मेरे को पता नहीं इसको कैसे, हाउ टू सेट Peace. द रिदम. सो कश्ती एज अ फिल्म आई फील कि दैट इज वेयर आई मतलब आई मेस्ड अप, जहाँ पे पेस एंड रिदम की इतनी नॉलेज ही नहीं थी टू फिट द फिल्म. एंड देन वॉट एवर आई न्यू एंड ऋतिक न्यू, वो पूरा मिल के Club. दैट जॉइंट एफर्ट हैज फाइनली मेड व्हाट द फिल्म इज. सो अब पेस एंड रिदम आई एम स्लोली ऐसा डिस्कवरिंग. He's ऋतिक gonna कब kill तक you. हमें मारो मुझे मारो. Okay, but quite honest, you're very honest about this, and that's good because the thing is that okay, one random transition for this conversation that whenever so I read this one quote which said that every cut is a lie. I guess it's over here somewhere. It's from I don't know whom, but it's there. So it says that every cut is a lie, and but the editor has to be very honest to the film so that he knows when to cut and when to lie. So do you think ये सब discover करने में भी बहुत time है या अभी कुछ initial stage पे you are understanding what does this mean or this mean? What do you think? कुछ कुछ चीजें समझ आ लाइक फॉर लाइक व्हेन आई रीड अबाउट लाइक द आर्ट साइड ऑफ एडिटिंग एंड नॉट हाँ, लाइक द हाँ. टेक्निकल साइड. तो आर्ट हम्म, साइड में भी कुछ चीजें यू रियलाइज की फक यार, सिंस like I've edited Kashti and I've edited a few such छोटा projects, and since I know where I made the cut and मेरे दिमाग में क्या चल रहा था while making the cut, so कुछ चीजें तुरंत समझ आ जाती है. But कुछ हम्म, चीजें I feel कि editing has a lot to do with like understand like uh,
like you need to know your film, and फिर when you know your film तो एक gut feeling आती है अंदर से हाँ, कि instinct, yeah. this is, हाँ, एक वो instinct develop हो जाता है, and that हाँ, instinct हाँ, takes अपना खुद का time, like, and हर फिल्म हम्म, के लिए अलग अलग होता है, like अगर मैं हाँ, कश्ती पे मेरे को एक gut feeling आ रही होगी तो not necessarily कि वो अब वो एक मैंने मसल डेवलप कर लिया जो दाल भात में भी हम्म, काम आएगी, हम्म, वो हर एवरी फिल्म के लिए यू द सेम हम्म, प्रोसेस इज नीडेड स्टार्ट का, okay, सो हाँ, हाँ, एंड एवरी कट इज अ लाई इज तो आई like you're cutting, you're not letting, अगर तू सारे शॉट like you're manipulating the audience into yeah, 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 believing like you're forming हम्म, the story, and editing is also, I feel editing is like very much like writing, and मेरे को हम्म, documentaries इससे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि entire yeah, documentary is written on the edit stage, yeah, तो yeah, yeah, पूरा writing process is while you're हम्म, editing the film, हम्म, so editing is तो complete manipulation anyways, मतलब कुछ भी you're I'm deciding what I want the audience to feel, हाँ, audience के हाँ, हाथ में कुछ भी नहीं है अभी. हाँ, okay. And let's move on to graphic designing. When did you start? Why did you start? And why do you like to do it? Overall, graphics हाँ, designing. when did I start is जब हम लोग कह रहा हूँ जब मैं फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड में था, सो तभी लाइक माई बेस्ट फ्रेंड इज वेरी आर्टिस्टिक, ही इज वेरी गुड Hmm, एट ड्राइंग hmm, एंड ही इज वेरी आर्टिस्टिक, एंड मेरा आर्ट एकेडमिक सब कुछ ऐसा लाइक बी बी लेवल पे average. है, हाँ, एवरेज लेवल पे है, सो तभी वी वर लाइक ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू लाइक वो कॉमिक बुक्स ड्रॉ करता था और मैं स्टोरी इनपुट्स देता था, तो हम लोग कॉमिक बुक्स oh, okay. बनाते थे एंड ऑल, एंड देन Nice. आई वाज हाँ, इंट्रोड्यूस्ड टू लाइक, डू यू नो व्हाट कैरेक्टर स्प्राइट्स आर? no. सो एक कैरेक्टर स्प्राइट एक बहुत बड़ी सी इमेज होती है जिसमें Hmm. हर कैरेक्टर, एक एनिमेटेड कैरेक्टर के सारे मूव्स होते हैं, लाइक एक लेग Oh, उठा okay. हुआ, एक हाथ हाँ, ऊपर हाँ. एक हाथ नीचे, like the Hmm, entire animation and clips, so you hmm. can cut pieces from there and you can form like your own animation from it. Okay. हाँ, हाँ. So all this I discovered in like fifth sixth standard, and while I was discovering, so since like uh matlab when you're in that phase where you haven't found your interest, like you don't Hmm, know what you're passionate about, so hmm. anything जिसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आता है वो ऐसा क्योंकि कोई भी Yeah, चीज yeah, yeah. थोड़ी सी भी ऊपर बढ़ती है तो यू फील कि यही है, Yeah, हाँ, लाइक हाँ, अगर हाँ. मैं हाँ. गिटार का एक स्ट्रिंग बजाना सीख लूं और मेरे को और कुछ भी नहीं आता तो आई फील अब तो बैंड ही यही बनाना है. है अब नेक्स्ट अब नेक्स्ट स्टेज इज लाइक गिविंग अ लाइव कॉन्सर्ट एंड एवरीथिंग, सो तभी हाँ, कैरेक्टर स्प्राइट्स एंड ऑल के साथ ऑल दैट हैपेंड, फेल्ट कि हाँ. ब्रो दिस इज टू मच फन, एंड तभी इट वाज टू इजी, स्प्राइट डाउनलोड Hmm, करके यू जस्ट हैड टू लाइक फॉर्म योर ओन स्टोरी एंड इट वाज टू मच फन, so all that started, and I've मतलब art and craft point of view में I've been थोड़ा like I've been hmm. काफी interested, my mom's a painter and all, so वो I Oh. think genes में ही होगा, Hmm, so hmm, hmm. after then 8th 9th 10th में like I wasn't doing anything as a art related. Then Hmm. 10th standard is like your stage of deciding like now what you want to do. अब तो so तभी Mac बहुत. came into life. Then Photoshop. Then when Mac came, then Photoshop came. Hmm, फिर Photoshop. hmm, hmm. फिर interest kept developing, and then जैसे तायका वातीती ने अपने एक टेड टॉक में ये बोला था जो Hmm, बहुत hmm. इट्स, सो उसका भी ही इज नॉट, he doesn't like he's not attached to filmmaking, he just Okay. wants to express, and now that can be हाँ. in any art form, वो Hmm. पेंटिंग भी करता है, वो पोएट्री भी लिखता Nice. है, वो एनी फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, सिर्फ स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, सो वो दैट लाइक बहुत ऐसा अटैच हो गया Hmm. to that, like I got really attached to that thought, and हाँ, हाँ. graphic designing kind of like वही character sprites, and then Hmm, छोटी छोटी चीजें kind of led me to like going to math and then learning hmm. Photoshop and all, and then once you're like वो वैस like देखो म्यूजिक बजाने का like देखो बहुत मन है म्यूजिक बजाने का, कोई हाथ में गिटार दे देगा तो फिर तू हाँ, करता ही हाँ. जाएगा, तो वैसा हाँ, फोटोशॉप जब आया ऐसा हाथ में, तो आई वाज लाइक शिट हाँ. ये तो बहुत कूल चीज है, इससे तो कुछ भी कर सकता है, हाँ, so हाँ. then I started making chota chota things, and then that's how Hmm, hmm. graphic designing started. And then like Okay. main graphic designing started when I joined Litfest.
Mhm. So when Litfest happened, उसके पहले तक I wasn't that like graphic designing was just a thing कि किसी ने help मांगी और मेरे को Photoshop use करना आता है तो कर देता है types. हाँ 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 हाँ. So but when Litfest happened, I was like कि shit मतलब this is Real, I हाँ. can be good at this. ये सिर्फ helping point of view से थोड़ा ज़्यादा है. Mhm. So then I got interested like फिर proper graphic designing चालू हुआ उसके बाद. Okay. And then after that, you just started doing random work for people that anything and everything you're picking up. Or are you हाँ doing मतलब are you doing I'm specific thing? I'm not technically a graphic designer क्योंकि Okay. like graphic designing का भी मेरे को Yeah. टाइप मैंने हाँ मतलब आई डोंट नो द थ्योरी पार्ट ऑफ इट वो वैसा ही है Hmm. कि मेरे को मतलब मेरे पास पेपर है मेरे पास पेन है और मेरे को पेन चलाना आता है Hmm. मेरे को Nice. और मैंने एबीसीडी तो सीखी नहीं है उसकी सो आई Uh, नो हाउ टू यूज द सॉफ्टवेयर एंड आई हैव थोड़ा आर्ट का स्किल्स बट आई डोंट नो hmm. एनी रूल्स जैसे मेरे साथ बहुत बार होता है कि मैं सनैन के साथ एक लोगो डिजाइन कर रहा था and she Hmm. asked me कि ये so logo designing भी if Hmm. you it's an entire different Yeah. thing Yeah. you have to Yeah. study logo designing वो Hmm. भी एक marketing and all का वो एक separate चीज ही है so बहुत Hmm. सारे rules आते हैं उसमें कि place your text like this so it's more visible it's Yeah. बहुत सारी चीजें उसमें so Hmm. Sen asked me कि इसमें text कैसे place कर सकता है so I was like मेरे को पता नहीं bro अगर अच्छा दिख रहा है तो कर सकता है and तेरा logo है तेरा call है so Uh, वो वैसा ही I'm not a graphic designer I know how to use mhm. the tools and I have थोड़े artistic skills तो काम कर रहा है Oh, okay. You're just सब exploring. कुछ हाँ सब But कुछ मेरा सब कुछ I लक think पे ही चल रहा है nahi yaar, nahi, that's not true. That's genuinely not true because the thing we were working on, the last thing was actually before the podcast ka graphics, we worked on this, the motion graphics video. And I've gotten hmm. a lot of compliments and I told them that, okay, I know that guy is really good, really good, really good. And the best thing about your work is that your work is very clean. And that's something I really appreciate because whatever it is, kitna bhi bada, kitna bhi choda, you put your 100%. So I'm pretty Hmm. sure it's not nothing to do with your luck. And it's Semicolon just, is semicolon का logo is major collaborative work like उसमें collaborate उसका title should have been collaborative logo no, collaborative animation see, logo was done by other graphic designer. Then you did the collaborative whole animation it was collaborative, but the way you pulled it, the see, mera kya kaam hai, Baba? I'm the like hmm. main thing I'm focusing on is directing, right? So I know what I want. Okay, I don't know how to Hmm. use After Effects. I don't know anything. But even in that part, you are not just a technician. You added a lot of things of your own, and then it became Hmm. what it became. It's not like Hmm. this is what I strongly feel that it's you and not just your luck. So itna bhi This modesty. Baba, मैं बोल दिया sweetest at guy. Don't be this so sweet. this this also I've learned very recently where like people yeah this is for you now and a lot of people for Nemal for Sanan and for Ritik and all the people I've worked with not Hmm. everybody but most of them when you're working for a person जिसके साथ मतलब जिसके साथ connect होता है तो giving your 100% is very easy it doesn't feel like you're giving Hmm. your 100% so semicolon के लोगों के साथ भी I didn't have to put an extra effort to give in my 100% वो खुद से ही हो रहा था so that is why I Hmm. feel कि मतलब इसलिए फिर वो क्रेडिट लेने को ऐसा थोड़ा awkward लगता है क्योंकि इतना मजा आ रहा था करते हुए कि काम वाली फीलिंग नहीं आई तो फिर ऐसा इट डजंट फील कि बहुत कुछ ग्रेट किया है इट जस्ट फील्स कि हाँ किया है और ये बन गया बहुत ग्रेट बिकॉज ऑफ लाइक द एनवायरनमेंट एंड द पीपल यू वर वर्किंग विद Okay. Do you feel that in the future there is a possibility of you switching to editing to some other stage? Like I know you said that you love being on set, and there is this one dilemma that set per and I are editing. I guess that was in the previous conversation. Sorry, we lost that. But do you think there is a possibility of you switching to either graphic designing or some other department of filmmaking? Or if you had to choose, what हाँ that will be? Huh, okay. if very मतलब very possible that I switch to something else क्योंकि Hmm. अगर मतलब even though I I really like editing और एक दिन Hmm. तो वापस आ जाऊंगा उस पे अभी अगर if I Hmm. like switch paths but very Hmm. possible that tomorrow you call me on set and Hmm. I do something very different Hmm. and I like it so much कि then I decide कि नहीं यार अब ये explore करना है
because मतलब Okay. in the end main point is to like वो उसमें kind of it's also related to like थोड़ा deep conversation है वो but चलो. मतलब जैसे अगर today if I tell the entire world कि ब्रो मेरे हाँ. को एडिटर ही बनना है एंड मैं हर जगह डाल दूँ आई एम एन एडिटर एंड एवरीथिंग सो देन टुमारो स्विचिंग इज थोड़ा आई विल गेट नर्वस कि यार सबको बता दिया एंड फिर ईगो भी आ जाती है बीच में कि अब मैं एडिटिंग छोड़ के नाउ आई से आई वांट टू बिकम अ पेंटर सो लाइक पीपल विल थिंक हिज वर्ड मतलब वो बहुत सारी चीजें हैं उसमें कि ये रैंडम स्विच क्या था मतलब फिर वो ऐसा भी है कि मे बी ही डिडंट एक्सप्लोर एडिटिंग एज मच और सिर्फ ऐसे ही बोल रहा था एडिटिंग करनी है बट फिर माई एंटायर पॉइंट इज कि वो दिन जिसमें सबसे ज्यादा मजा आ रहा है वही करना है सो अभी के लिए वाह. फिल्म मेकिंग तो है कि फिल्म हाँ मेकिंग में हाँ बहुत हाँ. मजा आ रहा है बट अगर किसी दिन साउंड ऑपरेट करने में एडिटिंग से ज्यादा मजा आने लगे तो फिर उस दिन से साउंड फिर जब सही है तक फिर भाई. एडिटिंग का ज्यादा सर ने जो कहा आई है वो कुड लिख लो. फेयर इनफ मैन. इट्स वेरी नाइस दैट. हाँ ठीक है सो ना, मतलब हाँ ठीक है, अभी एडिटिंग में मजा आ रहा है, अभी एडिटिंग कर रहे हैं, आगे जाके कुछ और मजा कर लेंगे, बट द एंड गोल ऑफ एवरी so to say creative person is to not feel like they're working. It has to be हाँ something which या is, yeah, So fair enough. filmmaking overall I really enjoy. Like I Mm-hmm. have zero writing skills. बट अगर तू लिख रहा है और तू बाजू में बैठा के रखेगा तो भी मेरे को काफी मजा आएगा ऑल्सो I've डिपेंड्स seen ऑन that. तू मतलब हाउ अटैच्ड आई एम टू द स्टोरी बट मेरे को बहुत मजा आएगा सिर्फ बाजू में बैठने में भी बट अगर किसी दिन उसमें मेरे को एडिटिंग से भी ज्यादा मजा आने लगे सो आई जस्ट स्टिक Hmm. टू मैं तेरे साथ ही बैठूंगा फिर पूरा दिन सिर्फ तू लिख मैं No, बाजू में बैठा रहा I saw this that we were in Lit Fest and you were हूँ sitting with someone and I was, मैं खुद तो ज्ञान बांट रहा था राइटिंग के बारे में जितना मेरे को आता है, मैं किसी को तो बता रहा था, and you were right next to me and after 5 minutes I saw तेरा chair turn हो गया and you were just listening. I didn't know you were sitting there, you were just listening. And आई I was like, रिमेम्बर okay, दिस it's just basically the hunger of learning, I guess. I guess. Okay, you were saying something? You want to say something? Plus, abhi I'm like, abhi I have this, like I have this privilege to do whatever I Hmm. want क्योंकि मेरे सर में earning is not a issue Yeah, right now as of today. yeah, yeah, मतलब yeah, yeah. अभी I don't have to pay the bills. तो अभी मैं कुछ भी Hmm. कर सकता हूँ. Right now is the time Hmm. that I can, मेरा my priority can only be having fun. क्योंकि I have Hmm. no responsibilities. Maybe Hmm. once I have responsibilities, I have to like pay bills, I'm on my own. And तभी if I'm doing an editing job, तभी शायद से I'll be थोड़ा reluctant to हाँ. suddenly switch क्योंकि I won't know कि अभी Yeah, मैं yeah, yeah. I'm an editor, I suddenly want to do something related to sound. Someone won't hire me as a professional. I'll have to start Of course. as an intern, as an assistant, which won't Hmm. obviously pay as much as my editing job earlier was. तो तभी प्रायोरिटी विल चेंज थोड़ा बट आई Hmm. ऑल्सो नो कि तभी ऐसा शायद से ऐसा हो सो देन अभी Okay. इज लाइक द बेस्ट टाइम टू यूटिलाइज दिस To हैव फन explore. वाला Yeah, yeah. या Uh-huh. कि अभी जितने मजे करने हैं कर लो क्योंकि अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बट आई Hmm. आई होप कि आगे जाके भी आई कैन कंटिन्यू दिस एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट डजंट टेक ओवर द हैविंग फन पार्ट क्योंकि फिर देन अ डेस्क जॉब इज नो डिफरेंट देन फिल्म मेकिंग क्योंकि तू दोनों में ही अगर Hmm. तेरे को पक रहा है तो फिर फिल्म मेकिंग करने का पक क्या है Makes sense. Or okay, what kind of films are you watching right now, or like what kind of type of cinema you like watching in general? Your Uh, recommendations. as much as I like Marvel, मेरा my favorite films में से कोई भी नहीं आता Marvel में से weirdly Oh, enough nice. तो फिर तो and सच्चा स्टूडेंट है भाई. my favorite or this you'll like to you'll like this my top film or that the film हाँ. I love the most since the past 2 years has been Capernaum जो तेरे स्टोरी में Oh. से देखकर मैंने देखा था एक हाँ दिन हाँ हाँ. बहुत बहुत रैंडम दिन आई सॉ कैपनॉम ऑन योर इंस्टाग्राम स्टोरी एंड इंट्रीगिंग वो पोस्टर ही इतना इंट्रीगिंग है वो बच्चे का Yeah. शक्ल इतना इंट्रीगिंग है सो हैड टू Yeah. वॉच इट एंड आई थिंक मैं 3-4 बार देख चुका हूँ अब तो Mhm. सो कैपनॉम इज वन फिल्म विप्लैश इज तो ऐसा विप्लैश आई Yeah. वर्शिप विप्लैश Mhm. विप्लैश इज उसका you might know this but Whiplash का final scene the editor was told to edit it as like a fight scene instead of a Yeah, yeah, music yeah. scene Yeah. Yeah. एंड इसलिए वो फीलिंग आता है और ये सारी चीजें लाइक व्हेन यू गेट टू नो ऑल दिस नो आफ्टर Mhm. यू लव आफ्टर यू ऑलरेडी लव द फिल्म
तो और ऐसा मतलब अभी वो सर पे ऐसा My, टाइटल कर Whiplash. So okay. What else? Whiplash, Capanom. Hmm. I've recently, abhi after this Mami, I watched Hmm. Mami 2019 में I watched two films that were Midnight Traveler and About Love. जो About love. Yeah. very very real films, मतलब obviously documentaries तो had to be real, but फिर वो डॉक्यूमेंट्री के अंदर भी मतलब अलग ही वो दस ऐसा हाँ गूज़बम्स सा आ जाता है वो मिडनाइट हाँ ट्रैवलर अबाउट लव के बारे में सोच के. Hmm. So abhi I want to explore those kind. Though recently, like in the past few months, I haven't watched zyada films. I've watched Hmm. like mera zyada time has been in like ये cycling, running and all of that. And उसका हाँ भी kind of somewhere वो वही आ जाता है कि cycling में बहुत मजा आ रहा था तो अभी कल भी cycling ही करेंगे हाँ और कल running भी जाएंगे क्योंकि running में बहुत मजा आ रहा था. तो अभी वो अलग ही वो हैव फन वाले जोन में चल रहा है मेरा पूरा. सो Okay. हाँ बट रिसेंटली मामी, यही अबाउट लव, मिडनाइट ट्रैवलर, ये सारी फिल्म्स हैव ओनली लाइक द फिल्म्स दैट आई वॉच्ड लास्ट हैव बीन स्टिल Hmm. स्टक इन माय हेड. एंड वही रिसेंटली Okay. आई हैवंट वॉच्ड ऐसे ज्यादा फिल्म्स एंड ऑल. Okay. Another thing that अभी तक the conversation is all कि chill है, जो करना है वो कर रहे हैं, this that, blah blah blah. But what is the fear you face in your craft? Because when, for example, you said that Aditi came and said pace and everything while editing currently. So is there a fear कि fuck bro, am I right for this job? Does that ever occur to you हाँ कि bro, ऑल. film अच्छी थी but मैं editing में हक दिया पूरा? Do you think सो that happens? बहुत अभी थोड़े दिन पहले समथिंग वेरी फनी हैपेंड वेयर आई वाज वाचिंग वन कट ऑफ दाल भात Mm-hmm. एंड आई रियली रिस्पेक्ट द एडिटर दैट्स एडिटिंग द फिल्म. लाइक आई Mm-hmm. डोंट नो हिम इनफ बट जितना भी मेरे को पता है आई रियली लाइक हिम. सो फिल्म स्टार्ट हुई एंड फ्यू कट्स दैट हैपेंड. सो स्टार्ट के जो फ्यू कट्स थे वो देख के मेरे को बहुत खुशी हुई बिकॉज इन माई हेड आई वाज लाइक कि फक यार मैं भी यही कट के बारे में सोच रहा था, मैं भी यही कट करता था, मैं जो हाँ कट बनाया था उसमें भी यही कट था. But then as the film progressed, things obviously हाँ things kept changing. And एक point ऐसा है where the film had become very different from the film that was going on in my head. हाँ And and like the main part was कि मेरे दिमाग में जो film चल रही थी, I didn't like that anymore. Now the film that I हाँ was watching, that someone else had edited, I was liking that more, and that was connecting to me more. And that is when I felt कि fuck यार ये तो सोचा ही नहीं था, ये कट कैसे किया, मतलब ये this cut I hadn't imagined, and but he obviously did it. So there's yeah something lacking कि जो मेरे को नहीं आता और जो उसको आता है, या उसका जो कनेक्ट होगा फिल्म से जो मैं नहीं कर पाया like while editing. So all that comes ऐसा दिमाग में कि am I like is editing for me, can I, क्योंकि since very recently I discovered कि technical part of editing and artistic part of editing is very different. And now that I discovered the artistic part and मेरे को पता है कि I'm not there yet, so that creates a lot of fear कि also because I know कि software use करना एक दिन का काम है. And कल ही आके someone, मतलब एक हफ्ते में सॉफ्टवेयर में someone can be as good as me एक हफ्ते में, बट लाइक yeah आर्टिस्टिक पार्ट डेवलप करने में उसको भी टाइम लगेगा, मेरे को भी टाइम लगेगा. सो वो सो सिंस आई एम नॉट देयर येट तो बहुत फियर आता है कि विल आई बी देयर, am I too late for this, or like have I lost, like has a train left the station. But then फिर एंड लाइक वो एंड में आई ट्राई टू गेट द थॉट कि नहीं यार एडिटिंग करने में मजा बहुत आ रहा है, और अगर मजा आ रहा है तो ये एफर्टलेसली मैं पहुंच जाऊंगा वो स्टेज तक भी विद टाइम. okay. मतलब And do you feel this one thing that every time you watch the things you have edited or made before and you feel like bro क्या खराब चीज बनाई है? Like why did I make this? Do you feel that? yeah, Then I I think feel that. that is the sense, like that's the sense of growth then कि अरे हाँ ठीक है वो हाँ बुरा वो काइंड ऑफ लाइक हाँ वो हाँ काइंड ऑफ सेंस ऑफ मेच्योरिटी कि ये इस if I constant like ऋतिक और मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होता है हाँ ये लाइफ पे बोलना बहुत रिस्की है, but ऋतिक एंड आई what is डिड it? एंजॉय द लास्ट स्क्रीनिंग ऑफ कश्ती. बट देन आफ्टर दैट आई काइंड ऑफ फेल्ट कि ठीक है, मतलब जब कश्ती एडिट कर रहे थे और आज में कुछ तो डिफरेंस हुआ है.
क्योंकि जिस दिन कश्ती एडिट करे थे उस दिन मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी, बट लास्ट स्क्रीनिंग में अच्छी नहीं लगी. दैट मीन्स समथिंग हैज चेंज्ड एंड समथिंग, Change, yeah, yeah, मतलब आई एम अज्यूमिंग समथिंग गुड हैपेंड इन बिटवीन, और yeah, थोड़ा yeah, yeah. ग्रोथ हुआ मेरे को. आई अंडरस्टूड व्हाई द डिसीजंस वी टुक और आई टुक, Hmm. why they're not working, and Hmm. वो knowing the why is मतलब growth has happened. Yeah, 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 yeah. and Okay, and meanwhile I'm also enjoying the process, so that hopefully. is it. हाँ, Yeah, होता that है. fear. Ritik बोल रहा कौन Ritik? Yeah, not this Ritik, not our Ritik, some other Ritik. Roshan. Hmm. One thing, there's this one strange request. Someone said that sing Shape of You. What's that? I'm gonna put you on. You this is a strange. You don't know what they're talking about, no? No, I don't. I don't. What is it? Someone someone from UPG must have commented, some senior or someone, they used to call me Ed Sheeran, and then uska गाना है अब. So Yeah, that I know. Shape obviously, of You. Okay, हाँ. अब मैं गा के नहीं Hmm. सुना रहा. अरे यार, इतना बोला है, अब नहीं. तो सुनाई दे. I can do that. Okay, so overall the life is going good, but what are the struggles you are facing? Like genuinely, I know you don't have to pay your bills right now, but there are other struggles which we have to talk about because I just realized that because it's you, the half or the major chunk of the conversation is our happy, happy, good, 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 this, that. But the initial point of this having this conversation was that what an artist of my age who's just starting out is facing problems wise, and of course the positives as well. But what is that, like, one is lack of faith in yourself. What are Hmm. the other things which are going not, like, which are Uh, bothering you? जैसे एक तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो, मतलब आई वॉन्ट समवन टू आंसर बट लोग आंसर करते नहीं है. लाइक आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर बहुत स्टूपिड है ये, बट आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर हाउ मच एडिटर्स ऑन, बिकॉज आई वांट टू नो इज इट लाइक अ प्रोफेशन दैट विल पे. बट कोई हाँ, बताता ही नहीं है. लाइक इट इज हाँ, वेरी हाँ, वियर्ड, कोई एडिटर बताता नहीं है हाँ. हाउ मच दे I'll गेट पेड. एंड tell you offline. Tell you offline. हाँ, एंड I मतलब just इफ आई वाज गेटिंग पेड, I was getting paid, मैं आज ही, मतलब whoever will ask me, I'll tell him honestly कि भाई इतने पैसे मिलते हैं. And बहुत weirdly हाँ, हाँ. enough, like the few, like जो मैंने editors के lives देखे हैं, उसमें they say Mhm. editors don't get paid enough. So I was Yeah, like, पहले enough. बताओ what is enough? I want to know what is enough. Is it like, does it match my enough or not? हाँ. क्योंकि little enough पे चलेगा, but everywhere I only hear कि editors don't get paid enough. Yeah. So Mhm. वो constantly fear रहता है कि यार ये क्या चल रहा है ये. Mhm. if editors don't get paid enough तो मेरे को मजा तो बहुत आएगा, but खाऊंगा कैसे? so so हाँ. all that, and then how to another struggle I feel that I face, and probably people of my age also must be facing, ki how to approach like a Mhm. production house or an ad agent, Mhm. ad production house, or an editor Mhm. or a director, Mhm. ki like how do I approach a person ki listen, I don't know enough, but if you take me in, I have a lot to learn, and then I have a lot to like Mhm. provide in that space. Mhm. बट लाइक हाउ टू अप्रोच पीपल इज थोड़ा वेर आई फील कि मेरे को Yeah. पता नहीं वो कैसे करना है. हाउ डू आई लाइक, मेरे साथ बहुत बार होता है कि मेरे को अगर कोई प्रोडक्शन हाउस को मेल लिखना है टू अप्लाई एज एन इंटर्न, मेरे को सब्जेक्ट ही नहीं पता होता क्या डालना होता है, कि मतलब मैं क्या लिखूं इसमें. लाइक व्हाट विल हाँ. मेक देम टेक मी अपार्ट फ्रॉम लाइक मी सेंडिंग लाइक अ शो रील एंड स्टफ. But like Yeah. how to approach people, then how much do you earn in this profession? जो बहुत basic questions है, Mhm. जो like more than me my family would be concerned कि ठीक है Mhm. तू कर ले, but like you're I hope you'll make money while you're doing it type C. Yeah. Okay. So this is again practical issues that is there because right now the whole Bollywood scene is going idhar udhar. And do you plan to go and edit films in Bollywood? Do you think that kind of cinema is something you want to contribute into too? मेरे को Ritik, before? मैं अभी मेरा first goal right now is to really make ad, मतलब I really want to edit ads, क्योंकि Mhm. अभी recently पता नहीं कुछ something has happened where वो that tiny stories तो I have to add. Yeah. वो Mhm. like ad is also like good ads are like a story in 1 minute.
Hmm. So more than like getting into Bollywood, I really want to edit ads here in India, like ads made by Indian production houses and Indian companies. Okay. Ultimately, I also want to edit. मेरे घर पे बहुत funny conversation चल रहा था when the entire Sushant Singh Rajput thing happened, where Hmm. my mom and all her sisters went like कि we'll boycott Karan Johar, we won't watch his films, Hmm. we'll only support Hmm. indie artists. I was like Hmm. very good, हाँ हाँ. ठीक है बहुत बढ़िया करो. And then my dad made like a funny comment कि अच्छा वो सब ठीक है, but if your son tomorrow gets offered a job by Dharma Productions, so like will you Hmm. ask him not to do it? And my Hmm. mom Hmm. went like कि नहीं यार Dharma would be paying well, like she doesn't Hmm. know, she's only Yeah. assuming. Hmm. तो वो सारी चीजें में and then ultimately like I want to I want to work in Bollywood, but then for example if I'm working for a production house, then वो मेरे हाथ में नहीं है कि वो कौन सी फिल्म ले रहा है वो like वो Okay. अच्छी जैसे I'd love to work for Anurag Kashyap instead of working for Karan Johar, Hmm. but like वो अब तो type of films तो समझ रहा हाँ. होगा कैसी, but But at the initial stage, you won't have that choice. Basically, that's what you're saying. हाँ हाँ Hmm. Yes. अभी के लिए आई डोंट थिंक इट्स लाइक वो वैसा ही सीन है कि Hmm. बेगर्स कांट बी चूजर्स. आई एम नॉट एट दैट Hmm. स्टेज वेयर आई कैन चूज कि मेरे को ये फिल्म एडिट करनी है. अभी Hmm. के लिए फर्स्ट गोल इज टू लर्न, एंड Hmm. कोई भी फिल्म का कोई भी एडिटर हो उससे सीखने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है. लाइक Hmm. even like a very take any very shitty film, but जो Hmm. भी वो a big production house shitty film, Yeah. but उसका editor also knows way more than I do. So अभी के लिए तो I'll work with any film Hmm. and any editor, क्योंकि मेरे Just पास to बहुत learn. मतलब मैं वो स्टेज पे नहीं हूँ कि मेरे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है. And Hmm. once I'm at that stage where I can pick the films I want to edit, then probably not Bollywood. Okay. Okay. बट So अभी के लिए बॉलीवुड, अभी के लिए ओपन टू कोई एनीथिंग. अभी गरीबी बहुत हिट कर रही है तो अभी तो कुछ भी चलेगा फिर आगे का देखते हैं. Okay, so is there anything else you want to share? Because the conversation went on for really long. I'm sorry we lost the first half of it. So this is going to हाँ be a कोई बात. small updated video, but ओके. it's a fun one. And anything else you want to share? Anything else you want to say? You want to ask? You want to share anything? व्हाट डू यू फील आर योर स्ट्रगल्स? आई एम वेटिंग फॉर. मैं कल ही सोच रहा था कि तेरा लाइफ कौन मतलब वेयर कैन आई वॉच विदार आंसरिंग दीज क्वेश्चंस. So Leher said this one thing on her live that I'll host one live session and you'll be the guest. I was like, हाँ तो सही है. फिर आई वोंट आस्क राइट नाउ, आई वेट फॉर दैट लाइफ. No, but I don't think that is happening because it's like ये क्या अंदर अंदर ही सब एक दूसरे को promote कर रहे हैं. Yeah, well, I'll one day I'll just go randomly live. But what were you saying? You were saying I if you don't ask, like your no your struggle. What do you feel your struggles are as like a? I'll ask as a point of view as you as a producer. Like you have your own production house now. You शून्य को लेके to get शून्य out, to get शून्य the recognition it deserves. What do you feel? देखो like I'm sure तूने अभी से वो सारा काम चालू हो रहा होगा तेरे दिमाग yeah. में तो at least if like not on paper कि इतना so much love and effort you've put into this and this needs to be seen. And like मतलब if you're going forward with semicolon तो ये if not with शून्य this will happen with your next film or your like your next to next film Yeah, कि where now yeah, yeah. you need to get this film to the audience it deserves, not तो वो उसका क्या स्ट्रगल एंड जर्नी. देख स्ट्रगल सबसे बेसिक लेवल पे यही है कि मेरे को नहीं पता ब्रो. आई हैव नो क्लू. And that's the major thing that right now because see I'm not sure Shunya where it's gonna go, what is happening. I have a few things in place and it might just go like I'm not concerned कि कितना audience मिलेगा. Right now my first concern is that this is the first film I made at this scale. The film has to be good, and till now people have seen it and I've got a positive response that it's a good film. So that was the first thing that was that I was concerned about ki are bro, because that's a very different experience when you it's like 40 people staring at you ki ab batao kya kar. That is very scary. So that stage is done, but now with semicolon films and Shunya
I'm not sure how that is going to come along. Is it going to come together or no? That is a different thing. But Shunya is going somewhere. Hopefully, will be out somewhere, I guess. And with semicolon films, I I don't understand money, to be very honest. I just don't understand money, and it's something I'm struggling with. That I don't have money, and if money comes, I don't know how to spend it. But वो learning curve चल रहा है, and I don't plan to be a producer, but if a producer is saying that you can't make this film or you have to add one song over here or one song over here, I'll put my 100% to get the money, understand how the film is sold, Hmm. and then produce the film myself. But I don't want to be at that place that where I can't choose which shot is going in my film. So I don't want to be on that spot. And like Abhi, same. I'm saying all of these things, but future might be really different. But this is what I feel Hmm. currently. That's a basic struggle to understand money and then get money to make film. तो वही है. But I think that can be sorted out. Struggle is कि अगली कहानी क्या कहनी है और कितने सच्चाई से कहनी है. So that's the main struggle I feel. जैसे हाँ. Nemil introduced me to this director called Werner Herzog, जो मेरे Oh. को अभी जस्ट मालूम पड़ा है. एंड उसका एक उसने बोला है कि मतलब गो एंड उसका एक कोट है वेयर इट Shoot. जस्ट सेज गो एंड मेक फिल्म्स, गो एंड शूट Yeah. फिल्म्स. Yeah. एंड Yeah. उसके पीछे उसकी रीजनिंग है कि ब्रो तू तेरे को फिल्म बनानी है तो यू गो वर्क एज अ बार टेंडर, यू Hmm. यू डू एनी जॉब दैट गिव्स यू लिटिल Hmm. मनी एंड वो लिटिल मनी लेके गो मेक अ फिल्म. Yeah. बट फिर जैसे समटाइम्स फॉर एग्जाम्पल यूर मतलब आई फील यूर मैं अगर तेको मैं नेमल को मैं ऋतिक को काउंट करता हूँ, आई फील तुम लोग वो रीमा दास वाले स्टेज पे हो, क्योंकि लिखना भी आता है, डायरेक्ट करना भी आता Hmm. है, शूट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, तू बाहर जाके फिल्म बना के आ सकता है खुद ही. Hmm. कैसी Hmm. भी बनेगी मतलब कैसी भी बनेगी फर्क नहीं पड़ता, बट तू बना तो सकता है स्टार्ट टू एंड. Hmm. Hmm. सो वो लाइक वर्नर हर्जॉग का वो चीज जो है जिससे तू कुछ भी कर, तेरे पास उतने पैसे तो आ ही जाएंगे कि तू एक छोटी सी फिल्म बना सकता है. Hmm. सो Okay. तेरे साथ लाइक डू यू फील समथिंग स्टॉपिंग यू फ्रॉम लाइक मेकिंग. Yeah, actually, I feel that, I know how to shoot, I know how to edit, I know how to do this, that. But see, there are two stages. One is that one story which hits you कि अरे ये कहानी अब कहनी है. But again, I don't feel that even if you know all the departments, you can't make a film alone. You'll need a crew. Obviously, You need actors and see, everything. if Just you like in put them together. a good film can't just मतलब तेरा ऐसा तू बहुत कम Hmm. चांस है कि a very brilliant film just comes out of one person. Hmm. It Hmm. need वो वर्नर हज़ार्ड को भी 3 लोग तो लगे ही थे शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए, 3 और लोग. हाँ, तो हाँ, हाँ. वो भी अकेले नहीं, मतलब उससे भी शायद से अकेले नहीं होता था. So obviously it's a collaborative effort, and for a Hmm. good film it needs to be a Yeah, collaborative effort, I yeah. feel. But Yeah. तेरे साथ कभी ऐसा कुछ होता है where you have an idea, but Hmm. now you have like a script, you want to make a film out of this, but Hmm. वो make like getting started to having an Of idea course. के बीच का जो Yeah, struggle. yeah, yeah, yeah. See, the artistic struggle is completely different. But see, अभी तो मेरे पास I don't have something. और इसके पहले scale of the film was so small that I was like, I can manage this. And there is this one thing Hmm. always running in my. I can't write a like a crowd fight scene. I can't write that right now because I know ये नहीं Hmm. बनेगी. And the person Hmm. tell that story is so intense that you will be like कि नहीं यार, is this necessary for this story? If it is, then let's not make this right now. Let's take some time. But the thing is that when we started making Shunya, we had the same question कि यार ये लिख तो दिया, ये कहानी तो लिख दिया. That was just a story form. Hmm. And it was me and Kota, Yash, I guess Dharmaj was there, and Satyajit was there. And we all were like, bro, this looks like a big film. Are we ready to make this? Another thing that do we have the resources to make this? So I was like, yeah, maybe not. So I went back home. I wrote something else. I was like, yeah, ek idea hai. We can work something around this. And they were like, yeah, it's a good idea. We can develop this. But again, at that time, ना वो प्यार हो गया था रे शून्य से. It was like, कि fuck, Hmm. यही करना है. Hmm. And then when I told the crew at that time, जो crew starting में था, and they were like, see, if you think कि ये करना है ना,
then let's make it. तो वो हम सब ना मतलब बच्चे थे और हमको अभी भी बच्चे हैं बट हमको पता नहीं था. And then we were like कि ठीक है. And the whole crew put their everything just to make this film. So I'll just tell you one. There are like two to three scenes जिसमें ऐसा 150 लोगों का crowd है, 100, 150, 80 ऐसा लोगों का ये सब है उसमें. The scale is so big, like performance, ये वो सब चल रहा है. So when it was happening ना, there was this one look we shared, all of us in the crew members, जो starting से लगे थे कि भाई कर लिया यार. वो that conversation happened in our city mall 6-7 months back was true that अगर करना है तो कर सकते हैं. So I know there are a lot of things we didn't get, a lot of things we got, a lot of things. वो struggle तो रहेगा, क्योंकि अगर वो easy हो गया ना, then I think we'll make films like Karan Johar. I don't know if it's right to be like that. I remember koi din, like when we were going, sometime when you had written Shunya, but वो अभी pre-production के पहले वाले stage में, I remember Yash on the staircase, and वो या तो कोटा या फिलोनी से किसी से बात कर रहा था about you कि bro इसमें 3-4 सीन है जो इसने लिख तो दिए हैं बट ये पता नहीं ये होगा नहीं होगा ये कैसे होगा. And I just overheard that. I wasn't a part of the conversation. मैं नीचे उतरते उतरते मैं वो सुना और मेरे को हंसी आ रही थी तभी. And in my head I was like कि नहीं bro ये हो तो जाएगा इन लोग से, ये कर तो लेंगे. And like the next thing I know कि वो हो रहा है अभी. Yeah. He was talking about pre-production. We were next morning, 4 o'clock, we're shooting. 4 p.m. Day before that, we got to know that a major thing we need for the shoot, to start the shoot, is not there now. That guy just backed off. And we were like, ab kaise hoga? So through those 8 days, we just stuck together and just did it. So ho gaya. So I hope, matlab, jab bhi bahar aayegi film, you guys will like it. And so I like to wrap up this conversation because I think Leher is feeling कि मेरे life का content जा रहा है सब. I think come back to you that you're not operating on the basis of your luck. You work really hard to get where you are, and I'm still gonna like make you work on a lot of things because I just love working. Love collaborating. So on that note, I think the live session has been really nice. A lot of people joined, a lot of people had fun, and thank you so much everyone for connecting. Thank you Vinayak for doing this. I had fun. Thank you. I hope you also had fun. I had a lot of fun. Yes. So let's end this. And मैं इसके just बाद तेरे को text करने वाला हूँ for like a lot of more questions and answers. Okay, sure. So ठीक है, चलो, bye bye. Okay, late है, being SG late है, कोई नहीं बाबा. We'll do another one. Bye bye. Bye.